क्या नाम है आपका? अवलेश कुमार यादव। कहाँ तक पढ़े हैं? मैट्रिक की नॉन मैट्रिक? मैट्रिक पास कर गए हैं? पढ़कर पास किए थे? अंग्रेजी पढ़ना जानते हैं? कम जानते पढ़कर बताइए, पढ़ाइए, पढ़िए। Mr. Khan, My lord, how will he be able to honor the order of the High Court if he cannot comprehend it? He cannot read it. He should be given a translated copy of the order by the petitioner or by the state. he can always, I mean, if there is any. आपको जब ये ऑर्डर देने गए तो आपने कहा कि जब हाई कोर्ट से ऑर्डर डायरेक्ट हमको आएगा तब हम इस पर संज्ञान लेंगे इसका। क्या कहा आपने? ये झूठ बोल रहा है। आपने कहा कब मिलने गए थे आपसे ये ऑर्डर लेकर इनके क्लाइंट? क्या कब गए थे? आपका क्लाइंट कब गया था? इनको 3 तारीख को गया था। 3 तारीख को इन्होंने क्या कहा? कहे कि चूंकि हाई कोर्ट से डायरेक्ट आएगा, वकील का दिया हुआ हम नहीं मानते हैं, हाई कोर्ट से आएगा तब हम मानेंगे। उसके बाद जो है हम तो स्पीड पोस्ट से भी भेजे। 14 तारीख को जब नोटिस देने हमको गए तो हमने उस समय भी कहा, नोटिस हमको दिया है लिखित में हुजूर के सामने है कि वो दोनों पक्ष को रोका जा रहा है। तो हमने कहा कि नोटिस में ऑर्डर में ऐसा नहीं है, ऑर्डर देख लीजिए। तो कहे कि वैसे कुछ नहीं होता है, हमको जो है हम बता दिए आपको। फिर कल गए हैं, कल हुजूर के यहाँ हम यहाँ कर रहे थे तो कल मॉडिफाइड एक नोटिफिकेशन लेके नोटिस करके फिर गए हैं और मेरे भाई से, पेटिशनर के भाई से सिग्नेचर करा लिए हैं बिना डेट का, डेट नहीं देने दिए। कहे कि इसको ले लीजिए 18 के डेट में, कि मतलब हम जो है उसको गलती से कह दिए थे, वो केवल एक पक्ष को रोकना। मिस्टर खान, दुल्हिन बाजार में यही हो रहा। हाई कोर्ट का ऑर्डर होता है टू रेस्ट्रेन मिस्टर एक्स, द पुलिस ऑफिसर रेस्ट्रेन द पिटिशनर एज वेल एज मिस्टर एक्स। So for that, my lords, I am absolutely speechless. But then the matter has been. आप इनको 2:45 बजे लाइए। 2:45 बजे इनके एसएसपी आएंगे, उस समय भी सुनेंगे। And I will have to decide whether the High Court order, which has to be communicated to the police officials, has to be translated in the office of the High Court, then communicated, or the petitioner is directed to communicate a translated copy. This is happening every day, and it has happened in Dulhin Bazaar. My lords, can I? I will initiate a contempt proceeding against this fellow. He will go to jail. My lords, can I? Yes. Yes. Now, there have been various orders passed by my lords, and by and large, orders have been complied. I mean, this is an exceptional situation where I cannot defend him, but then where this unfortunate thing has happened. Mr. Khan, you have been appearing. You don't have and supporting the police. I have also been supporting the police so far as law and order is concerned. But when the police takes the matters into its own hand, and when especially the orders of the High Court are not understood or they willingly violate, if an order is there that this fellow is restrained, they go and restrain the petitioner also. And this is not happening with this ASI. It is happening right from this SSP onwards. They try to misinterpret the order. They try to misinterpret the order to help persons with muscle power, persons with political backing, persons who are connected with a political party or with few political parties who are in power. This is happening, and in Patna district this is happening, especially Dulhin Bazaar police station it is happening. I will direct the SP to change every police officer from transfer police officers of Dulhin Bazaar police station, or I will initiate contempt against them. Tell him to come at 2:45. He will be here. Yes, he will be here. I will take this up. This case had to. Just one or two submissions for my lord's kind. 2:45. 2:45 का हम खाली ये I have got this. We have ensured
There was initially a wrong was. I am not interested in the fact that you have ensured. I am interested in the fact that why did he act in such a callous manner and why he did not honor the order of the High Court. When there was an order, he could have filed a modification saying that this cannot be executed. If my lord, let me make. If he doesn't understand English, he should have contacted you, come to your office, and then allow me to make one fact absolutely clear. If there's an order of the High Court, it has to be complied. There's absolutely no issues, no doubts about. File दीजिए. There's no issues. The moment the matter was mentioned and when I talked to them, my lords, I explained to them, this is what you have done, you should not have done. They called the other side, they ensured. The other side, respondent number 5. I mean, I should say he's 6. He's been 6 to 9. But as far as my instruction goes from the police officers or that Dulhan Bazar PS is a criminal. There's no doubts about it. How many cases? कितने केसेस हैं उस पर? अरे कितना मेरे थाना पे नहीं है सर, दूसरे नहीं मालूम। तो क्रिमिनल कैसे हो गया? नहीं है उस पे केसेस। आप पर कितना केस है? 6 to 9 में हुजूर जो इन पर? नहीं मेरे ऊपर एक 6 जो रेस्पोंडेंट है प्राइवेट रेस्पोंडेंट उनके ऊपर इमीडिएट एक केस हुआ है। इसके पहले किस सेक्शन का? 302 का है हुजूर। क्या नाम है आपका? नीतीश कुमार, नीतीश शर्मा जो है, इनको मेन असेलेंट भी नहीं है, इनको फंसाया गया था, उसमें इनको बेल हो गया था बहुत जल्दी। बाकी लोगों के खिलाफ कुछ केस हम बता रहे हैं। उसके बाद we called his wife since he was not coming. We called his wife and the wife has put in her signature. We have absolutely in simple and strictest term communicated to her that there was a mistake on our part that we issued such kind of orders. We have rectified it. Now you are not going to go anywhere near that piece of land. And my lords, as far as, because earlier also we had in SD entry was done by us because this gentleman, Mr. Nitish, because there was a dispute. So when the police went to that place of dispute, the occurrence, the field, this Nitish Kumar, the respondent, he created a hell lot of scene out there, abused the Mr. So I mean, ऐसा नहीं है कि we are क्यों नहीं अरेस्ट करते हैं? अगर पुलिस के सामने सीन क्रिएट करता है तो 353 किसके लिए है? आईपीसी। अब आप चुप रहिएगा पांडे जी, अभी हम सरकारी वकील से बात कर रहे हैं। ये 353 कब के लिए रखते हैं? जुलूस का जो वायलेशन करता है उसी के लिए। 353 का यूज कब करेंगे आईपीसी का? जब आप पर आप किसी लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन में गए और नीतीश शर्मा ने आप के साथ बदतमीजी किया या कुछ किया तो आप लोगों ने उस पर कौन सा मुकदमा दर्ज किया कोई काम? सनहा दर्ज किए। केस दर्ज करना मना है। सनहा से क्या होता है? क्रिमिनल है तो उसको अरेस्ट करके अंदर कीजिए। 302 में बेल हो गया तो वो क्राइम करते रहेगा। आगे